Hello students, now we are solving sums related to slopes of line, class +1. Now we have a quadrilateral has the vertices. साढ़े कोल एक quadrilateral has the vertices at the points -42, 26, 8, 5 and 9, -7. Show that the midpoints of the sides of the quadrilateral are the vertices of a parallelogram. साढ़े कोल जिहड़ी quadrilateral दित्ती हुई आ उहदे vertices दित्ते हैं एंड असी ये समझ की शो करना शो दैट द मिड पॉइंट्स जेड़े मिड पॉइंट है कि क्वाड्रीलेटरल दे जेड़े मिड पॉइंट्स ने आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम वो की बनाउंदे आ एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं. नाउ वी विल बी सॉल्व इट. Now first of all we make the quadrilateral. ये साढ़े को किया quadrilateral. Now let the vertices of quadrilateral be A. फर्स्ट नूं असी A का नाम देता A -4 2 B 2 6 C 8 5 and D 9 -7. Let the vertices of quadrilateral be A, B, C and D. So here is A that is -4 2 B 2 6 2 6 and similarly C 8 5 and D 9 -7. Now we want to show the midpoints of this quadrilateral are parallelograms. Now let L M N P be the midpoint of line segment AB, BC, CD and AD. Now L M N P. Let L M and P be the midpoints of line segment AB, BC, CD and AD. Now we want to prove that midpoint में अगर ज्वाइन कर दी असी L नू M ना M नू N दे नाल N नू P दे नाल and P ਨੂੰ L ਦੇ ਨਾਲ
तो जो ये साडी हुण डायग्राम बन रही है LMNP, वी वांट टू शो इट्स इज पैरेललोग्राम। हुण पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हुंदी है, जिहड़ियां अपोजिट साइड्स की होंदियां ने, की होंदियां ने पैरेलल होंदियां ने, ये असीं शो करना। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड द वर्टिसेस of this parallelogram। LMNP ਦੇ ਕੀ coordinates ਨੇ? So the coordinates of point L ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? L equal to coordinates of L -4 to -4 plus 2 over 2 and 2 plus 6 2 plus 6 over 2 coordinates of L, and it becomes -2 over 2 8 over 2, 2 dina 2 cancel, 2 4 the 8, that means -1 and 4 coordinates of L -1 and 4. Similarly coordinates of M, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ मिड पॉइंट फार्मूला लगाया वा। मिड पॉइंट फार्मूला मैं पहला प्रीवियस तुहानू करवा चुकिया वा। नाउ कोआर्डिनेट्स ऑफ M, कोआर्डिनेट्स ऑफ M की होंगे? सिमिलरली कोआर्डिनेट्स ऑफ M 2 plus 8 over 2 5 plus 6 over 2, and it becomes 10 over 2 11 over 2, 2 5 the 10 means 5 11 over 2. Now similarly coordinates of N, coordinates of N 9 plus 8 over 2 and -7 plus 5 over 2, and it becomes 17 over 2 minus 2 over 2, 2 na 2 cancel, 17 over 2 minus 1. So M the coordinates we have 5 11 over 2 and coordinates of N 17 over 2 minus 1. Now coordinates of P, coordinates of P 9 plus -4 over 2 -7 plus 2 over 2, 9 minus 4 5 over 2 minus 5 over 2, 5 over 2 and -7 plus 2 minus 5 over 2, that means coordinate of point P 5 over 2 minus 5 over 2. Now after finding the values of coordinates of L, M, N and P, first of all we will find the slopes of LM and PN। असी LM दी स्लोप ते PN दी स्लोप ये फाइंड करांगे, and after that slopes of MN and LP। अगर
L M P N the slopes equal M N and L P the slopes equal तो एक ये जो डायग्राम आ साडी ये पैरेललोग्राम होवेगी. Now let us check what the values of these slopes come. Now students, we will find the slope of LM. Now slope of LM. We know what is the formula of slopes of line. Slope of LM means y2 minus y1 over x2 minus x1, which means now here x1 y1 x2 y2. Now y2 minus y1, that means 11 over 2 minus 4 over x2 minus x1, 5 minus 1. So it becomes 11 minus 8 over 2, 5 minus plus 11 minus 8, that means 3 over 2 whole over 6. Now it becomes 3 over 2 1 over 6. 3 to the 6, that means 1 over 4. Slopes of L and M we have find. Now similarly, slope of Pn, again x1 y1 x2 y2. Now slope of Pn, slope of Pn. Pn की स्लोप की होगी y2 minus y1 over x2 minus x1, y2 minus 1 minus of minus 5 over 2, x2 minus x1 17 over 2 minus 5 over 2, and it becomes minus 1 plus 5 over 2 over 17 minus 5 over 2. Now minus 2 plus 5 over 2 whole over 17 minus 5, that is 12 over 2. It cancels, so 3 over 2 over 6, and it becomes 3 over 2 1 over 6, 3 to the 6 1 over 4. Slope of LM and slope of Pn. You know, see LM, slope of LM, that means M1, our M1, and slope of Pn, that means M2. Slope of LM equal to slope of Pn. Both कितनी है 1 over 4. So therefore slopes दोनों लाइन की सेम आ गई,
दैट मीन्स एल एम एंड पी एन आर पैरेलल। दोनों की स्लोप की आ इक्वल आ गई तो दोनों लाइन्स की आ पैरेलल ने। देयरफॉर एल एम एंड पी एन आर पैरेलल। ये साडियां दोनों लाइन्स आ एक ही आ पैरेलल। हुण असीं चैक करांगे स्लोप्स ऑफ एम एन एंड स्लोप्स ऑफ एल पी। आ वालियां दो लाइन्स दी असीं स्लोप देखांगे। Now students, we want to find slope of mn and lp. Now slope of mn, slope of mn, y2 minus y1 over x2 minus x1. Given, name it m3. y2 minus y1 over x2 minus x1. Now in this case x1 y1 x2 y2 m and the slope असी फाइंड करन जा रहे हैं। y2 -1 y1 11 over 2 whole over x2 minus x1 17 over 2 minus 5 and it becomes -2 minus 11 over 2 whole over 17 minus 5 to the means 10 over 2 and it becomes minus 13 over 2 whole over 7 over 2 and it becomes minus 13 over 2 into 2 over 7. Now 2 cancel with 2, that means m3 equal to minus 13 over 7. साढ़े कोले m ते n दी स्लोप m3 equal to minus 13 over 7. Now slope of LP, slope of LP means m4 equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. Now in this case x1 y1 x2 y2 y2 minus 5 over 2 minus 4 y2 minus y1 x2 minus x1 x2 5 over 2 minus of minus 1 and it becomes minus 5 4 to the 8 over 2 whole over 5 over 2 plus 1 minus 13 over 2 5 plus 2 over 2 minus 13 over 2 7 over 2 and it becomes minus 13 over 2 2 over 7 2 cancel with 2 minus 13 over 7. Now because m3 equal to m4, slope of mn slope of lp की आ गया साढ़े को इक्वल आ गया, therefore mn
and LP are parallel. Now combining the previous result and this result means, in the previous result we find LM PN parallel ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੈ parallel ਨੇ, and in the second case MN LP ਇਹ ਵੀ parallel ਨੇ। ਕੋਲੇ ਜੋ ਇਹ diagram ਬਣੀ ਸੀ that means is parallelogram because opposite sides are ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ parallel ਨੇ। ਤਾਂ given जो साडे कोले क्वाड्रीलेटरल दे मिड पॉइंट नूं ज्वाइन करके जो साडे कोले फिगर बनी सी जां डायग्राम बनी गई सी वो की सी पैरेललोग्राम, यही असीं प्रूफ करना सी। थैंक यू सो मच।